If you guys have watched my high time frame analysis video, in that I have shared detail what kind of scenario we can expect unless we are not until we are in this demand zone of daily. So as you see, we anticipated price can do this, the next candle can just do this, तो इसके बाद वाला candle can just do like this. This is something I I I have already expected from the gold, so it's nothing new. Let's just look on the lower time frame to see. This is going to be a ट्रेड ब्रेकडाउन वीडियो. व्हाट काइंड ऑफ ट्रेड जो मैंने ऑब्जर्व किया था, जो मुझे मिला था, एंड हाउ आई कुड हैव मैनेज माय रिस्क एंड एवरीथिंग. So at that moment we had these two zones. Okay, so उस टाइम पे प्राइस इतना ही था. So overall plan was, if we get a candle closing below this region, then we are going for a sell. Okay, that's all the overall plan. But this series candle rejection from this area, so we had to modify our levels still here. So our new area is now this bricks are our new area. Price took rejection, this candle broke below. अगर यहाँ पे sell भी लिए होते, stop loss बहुत बड़ा होता, लेकिन this sell didn't make sense. Even we look on the lower time frame, we can see price close below. यहाँ पे week बहुत बड़ा है, इसने इस week से rejection लिया है. So we can't take a trade because इसने week के पास से rejection लिया है. So now this zone is now, we had to modify this zone because of the way price was rejected this area. तो इसके बाद हमारे पास बेसिकली एक एरिया था, यहाँ पे माइनर जोन था, जिसका उतना इम्पोर्टेंस नहीं था, बट इट वाज अ जोन, सो वी हैड टू कीप इन माइंड. So when I saw this candle rejected this area, and when this candle make a upper wick and break the low, that was the time candle ने एक पोटेंशियल क्या बोलते हैं, पोटेंशियल रेजिस्टेंस फॉर्म किया था. यहाँ पे कैंडल क्लोज नहीं हुआ था. once this candle broke the low of the previous candle, we anticipated sell, we took a sell. This would be our first TP, this would be our second TP, and that's the final area that we could have hold. So after this area, actually जो upside का move गया ना, this wasn't in my plan, honestly. This wasn't in my plan. The way this candle ने closing दिया था, that was amazing. Honest, if you believe me, if you ask me, I will say it was amazing. And there is something price action I have been noticing. It's been a while. Suppose candles are coming down, right? Okay, let's just mark it beautifully. Candles are coming down. This is how. And over here we have a bearish candle, something like this. Now we have a bullish candle with engulfing body. Okay. Something like this. That's the price आ रहा है. From next candle वो क्या रहा है basically? Let's say इसका wick थोड़ा सा और बड़ा करते हैं. Still wick, okay? So let's just make another candle and okay. So if you notice this, if you notice one thing, this candle ने जो closing दिया है, इस previous candle के wick के अंदर दिया है, although it has already broken high. So once the new candle बना के lower wick or minor lower wick whatever, breaking the high, we can expect a good volume from the market.
and market can actually push the price up. This is our buy, this is our stop loss. That's something I'm noticing a lot. This is happening on every time from 30 minutes, 15 minutes, 5 minutes, every time, even though H1 and even though राहुल ने भी इस वाले सेटअप पे काम किया है. एंड अगर हम इसको इस पर्सपेक्टिव से देखें, व्हाई डिड यू टुक अ बाय ओवर हियर, बिकॉज अगर हम यहाँ पे बाय लेते, our stop would have been very weak. See, this would have been our stops. But once we get a small body candle closing with bullish, that is giving a good stop loss from here to here. At least we are a very good stop loss. So that this trade makes sense to me. अगर इसी ट्रेड को हम 5 मिनट में देखें तो आई एम प्रीटी श्योर हमें यहाँ पे बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा. सो दैट्स समथिंग आई एम एक्चुअली वर्किंग ऑन एंड आई एम मोर इंटरेस्टेड टू सी हाउ आई कैन मॉडिफाई इट फॉर so I'm actually more interested to know how I can work more on this setup. Okay, so after that price went down. यहाँ पे price में support लेके went up. So this is something right now I'm working on. This could be my trade. अगर मैं शायद इतना फोकस होता तो, but I can't say 100% कि मैं मेरा ट्रेड लिया होता, because I'm still working on this setup. But this one looks good to me, honestly, if you ask me. So if you notice, प्राइस ने इस वाले जोन को बहुत ही अच्छे से रिजेक्ट किया है मल्टीपल टाइम्स. तो लेट्स जस्ट मूव आवर एरिया जोन्स. तो नाउ आवर जोन्स बिकम दैट. इसको बताते हैं. अभी यहाँ पे देखें तो प्राइस यहाँ पे started ranging. So there was no trade, neither we can take the sell from here now, buy यहाँ से, there is no trade. So we have to wait for candle closure. अगर हम यहाँ पे देखें, so now we have this candle closure. See, when this H1 close above this area, अगर इस H1 की closing notice करोगे, if you just notice this H1 closing, sorry, if you just notice this H1 candle closing, इसने closing दिया है above this all resistance on H1 time frame. No, this is we are talking about high time frame. Let's just keep aside lower time frame like 30 minutes and 15 minutes. They do matter, but when high time frame are giving confirmation that we are closing above the area, we are breaking the high of the previous candle. Then when it's, I have learned this one. Whenever there is a market open or session open or inter-session class, so H1 candles are most of the time, I'm talking about most of the time, H1 candles are bound to respect their highs and lows. So when this previous H1 candle break above this support, means you can say at this support, not slightly above closing, and made a lower wick breaking the high of the previous candle, what's the probability of this candle to go up? It's very high, since this is the volume time session, pre and Y. So on that basis, I may have taken this trade on the lower time frame पे जाके, and see, जो हमने सेटअप वहाँ पे देखा था, we got same setup, we got breakout, we got candle. इस वाले कैंडल ने सपोर्ट को रिजेक्ट किया, but close bullish. So once this candle went up, break the high, we could have taken buy. This would have in 30 minute दिखा रहा है, but if you go on 30 minute time frame, 15 minute time frame, there is a more very good impulse setup. This was a very perfect setup, perfect trade. The one who have waited for this trade to play out, man, this was one of the best trade. 53 pips, stop loss 25 pips, turn, man. Once this candle close, current candle, you could secure your position most of the and let the run TTP. Okay, you may ask why you not considering this area, since
Look how this candle is closing. You may have closed 90% over here, but if you notice, there is a rejection weeks, 1, 2, 3 weeks साइड बाय साइड रिजेक्ट किया सेम प्लेस को. सो आई मैंने उस चीज को ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया. उसके बाद प्राइस बेसिकली कुछ किया नहीं खास, कैंडल वाइज कैंडल जाए. सो दिस कैंडल रिजेक्टेड, देयर इज नथिंग. ये वाला कैंडल फ्लिप हुआ था यहाँ पे आके, इसने सीरियस रिजेक्शन लिया. तो ओवर ईयर ना ऑनेस्टली देयर इज अ सेटअप जिसमें मैं ज्यादा ट्रेड नहीं लेता हूँ, बट दिस एक्चुअली वर्क मोस्ट ऑफ द टाइम. जब भी यहाँ पे सेटअप बनता है, इसको बोलते हैं अपन एशियन हाई लो ब्रेक टेस्ट. सो इफ यू सी यहाँ पे कैंडल ने लंदन का भी हाई ब्रेक किया है, एशियन का भी हाई ब्रेक किया. सो व्हेन दिस वन अगेन बैक इन द रेंज, सी एशियन हाई के पास आया, प्राइस ने. सो ओवर हियर व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट वेट फॉर अ गुड कैंडल, whether it's a rejection candle or whatever, or you are taking trades on whatever. As I told you, मैंने ऐसे सेटअप ट्रेड नहीं लेता most of the time, but this is also work very good. So let's just keep it aside. मैं उसको जब ट्रेडिंग नहीं लेता हूँ तो, and उसको बंद ही रखते हैं. So yep, well अगर यहाँ पे भी देखे अपन, तो जिसने भी इस एरिया का, जिसने भी वेट किया होता इस रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का, this candle broke this resistance, broke and closed above the resistance, हम यहाँ पे बाय ले सकते थे एक अच्छा सा. This could have been a very good buy, but the one who waited for it would have got. और यहाँ पे कब मिला था? 9 बजे मिला था. So I don't think इस टाइम में ट्रेड करता, या मैं ट्रेड नहीं करता. After that price just consolidating, nothing else. So well honestly, if you ask me what's the difference between this price action, जो प्राइस यहाँ पे जो सपोर्ट क्रिएट हुआ है, जो यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट हुआ है. तो देयर इज टू थिंग इफ यू नो. से नंबर 1 की हम बात करते हैं. सो ये जो कैंडल था, ये पहले बेरिश था, देन इट फ्लिप एंड स्टार्टेड क्लोज बुलिश. तो यहाँ पे हम बाय ले सकते हैं? नो, बिकॉज वी हैव अ रेजिस्टेंस अब 5-10 पिप्स के आगे रेजिस्टेंस है. कैन वी एंटिसिपेट दिस रेजिस्टेंस टू बी ब्रोकन? या वी कैन एंटिसिपेट, बट द थिंग इज steady timing. Right at this moment, we are at the 7. इस टाइम पे आई थिंक क्या होता है, ओपन NYSE ओपन होता है. दिस इज अ वॉल्यूम टाइम, नो डाउट इन दैट, बट स्टिल मैं ट्रेड नहीं लेता. यू आस्क व्हाई, बट आई विल टेल, मैं फिर भी बोलूंगा ट्रेड में नहीं लेता मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज वी हैव दिस रेजिस्टेंस मैन. हाउ वी कैन इग्नोर दिस वन? जब तक प्राइस इस रेजिस्टेंस को एक बार रिटेस्ट नहीं करता है, तब तक स्ट्रेट को लेना इज वेरी वेरी अनसेफ. और यहाँ पे अगर नोटिस करें, प्राइस ने फिर एक सपोर्ट बनाया, फिर नेक्स्ट कैंडल जस्ट क्लोज बेरिश, सपोर्ट के नीचे कुछ दिया है, मतलब सपोर्ट अभी सपोर्ट लिक्विडेट किया इसने. फिर ये वाला कैंडल बुलिश था, फिर फ्लिप हुआ, पर इसने इस वीक नीचे क्लोज दिया. ये वाला कैंडल गया, इसका भी लो ब्रेक किया, इसका भी लो ब्रेक किया, इसका बुलिश क्लोज हुआ. तो इस वाली कैंडल की जो वैलिडिटी ज्यादा मुझे लग रही है एज कम्पेयर टू दैट वन. तो यहाँ पे भी आई एम नॉट श्योर. आई एम नॉट श्योर. इस चीज को 15 में देखें हाउ इट लुक्स. Well, yeah, I would have waited for candle to close above the zone, or maybe after this so would have been very good trade. Yeah. So देखा जाए तो we have, sorry, we have this one, this trade, 40 pips, stop loss 20 pips. Yeah. Yep. This is for it.